Good morning, everyone. आज आंसर राइटिंग डिस्कशन क्लास रे आमे से सेम 6टा क्वेश्चन आमे डिस्कस करिबा बट बिफोर स्टार्टिंग द राइटिंग डिस्कशन क्लास एठी टिके समस्त जीए भी लाइव चैट रे ऑनलाइन अछंती एठी जॉइन करछंती से माने टिके एठी कंफर्म कर दियंतु कि साउंड आउ जो पीपीटी मु एठी ओपन करिछि पर्टिकुलरली साउंड एठी ऑडिबल अछि कि नाही सब ठीक अछि कि नहीं बफरिंग होछि कि नहीं एंड ऑल केही जणे भी एठी कंफर्म कर देले चलिबो सो आई एम गिविंग 1.5 मिनट्स फॉर दैट एंड आफ्टर दैट की कंफर्म करंतु न करंतु देन आई विल सिंपली अज्यूम कि सब ठीक अछि एंड आई स्टार्ट द आंसर राइटिंग डिस्कशन क्लास ओके आई होप सब ठीक अच्छी ऑडियो एंड वीडियो फर्स्ट मु किछटा एटी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दउची ओएस आउ आईएएस 2026 एंड 27 पई जो माने प्रिपेयर होचंदी प्रीलिम्स मेंस आउ इंटरव्यू फाउंडेशन बैच एठी लॉन्च हेची बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम रे अवेलेबल जो थरे 1 ईयर 6 मंथ्स फ्री रहइबो एंड लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलिबो एंड वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोविजन रबी एठी फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी एंड जॉइन करबा पई बैच इट स्क्रीन दे दिया जाइति जो नंबर दिया जाइति सेतरे कांटेक्ट करिके बैच रो डिटेल्स नहीं परिबे फॉर द डिटेल्स एंड जॉइन करि परिबे ओके एंड साथ ही साथ ऑप्शनल कोर्सेस भी लॉन्च हेची पीएसआईआर ओडिया एंड होम साइंस रो जो थिरे की पूरा सिलेबस कवर करा जिवो फुल सिलेबस कवरेज रहइबो वन ऑन वन मेंटरशिप दिया जिवो देन आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हबो रेलेवेंट नोट्स एंड मटेरियल्स भी दिया जिवो फॉर योर रिवीजन एडमिशन इज ओपन for more information contact this number ओपीएससी ओएस प्रीलिम्स भी जो माने 2026 पाई की प्रिपेयर होचंदी एंड जो दीटा पेपर आसे प्रीलिम्स एग्जाम रे जीएस 1 हैला एंड जीएस 2 हैला आई मीन जनरल स्टडीज एंड सी सैट रो फुल कवरेज एठी कोर्स रे करा जाउची साथ ही साथ वन ऑन वन मेंटरशिप एंड जो टेस्ट सीरीज रहिला सेतरे आपनकर 36 टा टेस्ट टोटल रहिबो नोट्स एंड मटेरियल्स पे एथरे भी सेम दिया जिवो 19 इयर्स रो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी एटी प्रोवाइड होची एंड एग्जाम प्रिपरेशन रे आपण माने जानिथिबे कि पीवाईक्यूज रो इंपोर्टेंस कोन एडमिशन इज ओपन राइट नाउ एमती देखिया गले जो कोर्सटा लॉन्च हेची कोर्स गुडियो जो लॉन्च हेची वैल्यू एडेड फीचर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट समस्त को मिलुची जेमती कि समस्त को रिवीजन सपोर्ट मिलिबो टारगेटेड क्लास थ्रू रे आ जो माने लाइव क्लास भी करि परिबेनी से माने रिकॉर्डेड वीडियो देखि परिबे ताकू रिकॉर्डेड वीडियो रो एक्सेस रहइबो फॉर एनी टाइम रिवीजन लाइव इंटरैक्शन से माने करि परिबे I mean dedicated live doubt clearing sessions ରହିବ one on one personal mentorship exclusive resources ମିଳିବ study notes chapter wise topic wise solved PYQs ବି ମିଳିବ and जो 36 ଟା test ମୁଁ earlier मेंशन କରିଥିଲି ତା ଭିତରୁ 28 ଟା test GS1 ପାଇଁ ରହିବ and 8 ଟା test CSAT ପାଇଁ ରହିବ and 28 ଟା test ରୁ 22 ଟା sectional ବା subject wise ଆପଣଙ୍କର ରହିବ then 6 ଟା full length test ରହିବ ପୁରା prelims mode ରେ and CSAT ରୁ 4 ଟା sectional ରହିବ and 4 ଟା full length test ରହିବ and test ହେଇ सारला ପରେ भी आपनको answer keys मिलिबो with explanations and post test discussion classes भी conduct हबो accessibility हो जेटा bilingual ରହିବ both english and odia रे available flexible modes ରହିବ online भी देई परिबे offline भी देई परिबे ऑल ओडिशा रैंकिंग आपन को प्रोवाइड हबो सो दैट आपन जानिबे कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड आपन केमिति निजर रैंक को इंप्रूव करिवे बोनस मटेरियल होची 1 ईयर रो नेशनल करंट अफेयर्स मैगजीन एथरे इंक्लूड होची सेटा प्रोवाइड हबो एंड दिस इज बियॉन्ड द डिवाइड एंड मोड ऑन अप्रोच जेमती कि सब्जेक्ट को एमती आइसोलेट करी करी कि बहुत कोचिंग सेंटर्स रे पढ़ांती जेमती धर पॉलिटी हे गला एंड इकोनॉमिक्स हे गला ए बिना इंटरलिंक करी कि त सेथरे कोन वे पिला ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी तांकर कम हे जाय सो दे फॉलो दिस वे बट
आमर लॉजिक है कि जो इंक्रीमेंटल स्ट्रेटेजी गोटे फॉर्म हम वेयर सब्जेक्ट्स माने कौन इंटरलिंक करी पढ़ा जिबे दे आर लेयर्ड रादर देन स्प्लिट गोल हो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग रो जाइकी गोटे कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन को फॉलो करबा लास्टली मुझे एबे मेंशन करथिली कि 19 इयर्स रो पास्ट 19 इयर्स देखियो गोल 2006 टू 25 जाके सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एथरे सॉल्व होची विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी एथरे इंक्लूड रही छि बही रे बुक ऑलरेडी लॉन्च हे सरची ओके तो एतिकी इन्फॉर्मेशन मते दबार थिला आउ आ ऊपर किसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपनकर दरकार थिले कि कोर्स जॉइन करिवार थिले मु जो नंबर टी कहिली स्क्रीन रे डिस्प्ले होतला से नंबर रे जाई कांटेक्ट कर पेबे राइट एबे हमें जिबा क्वेश्चन को 6टा क्वेश्चन रहइबो एंड पर क्वेश्चन भी मु 10 टू 15 सेकंड्स टाइम देबी समस्त को टिके क्वेश्चन टा टिके पढिया पई टिके भाबिबा पई एंड मु कहिबी कि समस्त गोटे कॉपी पेन नेकी बसंतु और जदि आपण आईपैड रे भी नोट करथिबे ई नोट्स नोथिबे एटी जहाँ भी मो कॉन्सेप्ट कहिबी कि किछि एमिति किछि पॉइंट जोटा कि नोट्स रे नथिबो ताकू निहाती भाबरे जट डाउन करिवे Examine the features of Chola administrative system. How did their village self-government institutions ensure political decentralization and accountability? Chola administrative system रा features को examine करिया को कहिछि तांकर जो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छी से केमिति पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करूतला इनश्योर करूतला से प्रोसेस भी एठी डिस्क्राइब करिया को कहिछि सो रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फॉर 10 seconds then I'll discuss the answer. ओके तो आमे आंसर फास्ट केमिति स्टार्ट करे सब सेशन रे विथ अ proper and brief introduction because introduction has to be brief kind of word limit apanakara limited rahuchi page भी limited rahuchi so introduction has to be brief and to the point question ର demand हिसाब रे okay माने जदि मु एटी एग्जांपल थ्रू रु कहिबी जदि आपनकर आंसर गोटे मूवी हिसाब रे नेबे ना तो इंट्रोडक्शन शुड बी द ट्रेलर तो एटी चोला पॉलिटी पई पचार जी सो द चोला पॉलिटी से कौन करथिला दीटा जिंस को कंबाइन करथिला कंबाइंड सेंट्रलाइज्ड मोनार्की with highly developed local institutions okay creating one of the most efficient administrative systems in India or एमती भी लिखि परिबे प्री मॉडर्न इंडिया राइट बॉडी बॉडी मु एठी मेंशन करछि आंसर पेपर मेंशन करिवेनी कि बॉडी बोली कि आपण डायरेक्ट स्टार्ट करि परिबे विथ अ सब हेडिंग देन बुलेट पॉइंट्स एंड एग्जांपल सेठी देबे जोठी रेलेवेंट थिबो एठी खाली मु समस्त बुझिया को एठी बॉडी बोली लिखली एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स कोन थिला फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स रे तरा आसीबो हायरार्कियल स्ट्रक्चर माने एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाइतिला इनटू मंडलम वालानाडु नाडु विलेज एंड इन द डिवाइड कोन पई करथिले फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस ओके एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर कोन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से केमिति करथिले रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ता तांगर साइंटिफिक लैंड सर्वे देन क्लासिफिकेशन टैक्सेशन एगुडी को फिस्कल स्टेबिलिटी को सेति बेले इनश्योर करथला
Then bureaucratic organization. Bureaucratic organization ତାଙ୍କର clearly ranked officials ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି military justice revenue ଏସବୁ handle କରୁଥିଲେ. So bureaucratic organization ତାଙ୍କର clearly ranked ଥିଲା. Fourth administrative feature କଣ ବା military strength ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିବା. Military strength ତାଙ୍କର army जो standing army ଥିଲା ସିଏ ତାକୁ support କରାଯାଉଥିଲା through land grants and tribute. ସେଟା ତାଙ୍କର military strength କୁ ବଢାଉଥିଲା. Then village self government institutions. Village self government institutions रे किए थिले सभा, then ur and नगरम. सभा होची autonomous brahmin assembly. ब्राह्मण असेंबली सभा जे कि टैक्सेशन इरिगेशन जस्टिस ये सब मैनेज करंदी. उर उर होची असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स. ओके कॉमन विलेजर्स. and नगरम होची मर्चेंट गिल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन टाउन्स. ओके देन आमे देखिबा डेमोक्रेटिक मेकानिज्म से कोन फॉलो करूथिले. डेमोक्रेटिक मेकानिज्म. डेमोक्रेटिक मेकानिज्म तांकर फर्स्ट थिला कुडावोलाई सिस्टम. कुडावोलाई सिस्टम होची एटा गोटे लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम जे कि प्रिवेंट करूथिला मोनोपोली को. देन कमिटीज. कमिटीज होचंदी स्पेशलाइज्ड बॉडी एंड ए माने कोथि पई कि होथिले फाइनेंस गार्डन टैंक हेगला टेंपल हेगला ए सब पई कि कमिटी थिला. देन अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी एनुअल ऑडिट थ्रू रुहेला कि रिमूवल ऑफ करप्शन पई कि. then public participation. public participation होची decisions recorded and announced जोड़ा publicly करा जाए. ओके सेटा ए मेकानिज्म टा सेतबेले भी फॉलो होतला. and role in decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन रे तांकर रिड्यूस हेतला सेंट्रल इंटरफियरेंस इन लोकल अफेयर्स. देन सिविक रिस्पांसिबिलिटी एनकरेज करा जाउतला. एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी इनेबल करा जाउतला. नाउ कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन भलिया कंक्लूजन भी सब बेले ब्रीफ होबा दरकार. ओके आ जो एठी चोला मॉडल जो हमें डिस्कस कले चोला मॉडल achieved a rare balance between what balance between imperial authority and grassroots democracy, ensuring both political decentralization and administrative accountability. सरला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 10 सेकंड्स दउछि मु.
सेकेंड क्वेश्चन कहला कि एनालाइज द कॉज बिहाइंड अर्ली मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया फ्रॉम 8th टू 12th सेंचुरीज 8th ରୁ 12th सेंचुरीज ଭିତରେ जो इंडिया रे अर्ली मुस्लिम इन्वेजन्स ହେଇଥିଲା ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ଫର୍स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एटी डिमांड करछि व्हाट वेयर देयर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल consequences देन तार लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल consequences कौन थिला ताकू बेटी डिस्क्राइब करियो पचारछि ओके तो तीनटा डिमांड हे गला आईडी क्वेश्चन तीनटा डिमांड को हमर एड्रेस करिवार अछि फर्स्ट तक ताकर कॉज देन लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट पकेला माने पॉलिटिकल ऊपर कोन पकेला एंड सोशियो कल्चरल ऊपर कोन पके सोशल कल्चरल ऊपर कोन पकेला इंट्रोडक्शन जो अर्ली मुस्लिम इनकर्शंस थिला इंडिया को इट बिगेन एज रेड्स किंतु से रेड्स ता धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हे गला इनटू सस्टेन्ड पॉलिटिकल एक्सपांशन एंड ए जो रेड रो पॉलिटिकल एक्सपांशन जाए ए जो ट्रांजिशन ता थिला एटा बहुत ग्रेजुअल थिला एटा सडन ट्रांजिशन नथिला ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड देन बॉडी रे फर्स्ट हमें देखिबा कि कॉजेस कोन थिला पछरे ताकर कारण कोन थिला आसीबार फर्स्ट होची पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन जो राइवल रीजनल किंगडम्स थिले से मानको भितर यूनिटी नथिला सो देयर वाज पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन सेकंड होची इकोनॉमिक मोटिव्स तांकर थिला जेमति कि टेम्पल्स गुडा बहुत वेल्दी थिले एंड जो ट्रेड सेंटर्स थिला से गुडी को इन्वेडर्स को अट्रैक्ट कला थर्ड मिलिटरी सुपीरियरिटी जेमति कि कैवलरी बोज मोबाइल टैक्टिक्स तांकर फास्ट थिला एंड इम्प्रूव्ड थिला स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ट्रेड रूट को कंट्रोल करबा चाहूतले जोटा कि सेंट्रल एशिया आउ इंडिया को कनेक्ट करूतला लिंक करूतला आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी एक्सपेंशन रीइंफोर्स्ड रूलर्स अथॉरिटी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इफेक्ट लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इफेक्ट रे फर्स्ट आसीबो कि सेंट्रलाइज्ड इंडो इस्लामिक स्टेट्स रो एस्टैब्लिशमेंट हला ऑफ सेंट्रलाइज्ड सेकेंड पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस रो इंट्रोडक्शन हला थर्ड नुआ रूलिंग एलिट्स तांकर इमर्जेंस हला and what was the socio-cultural impact सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट रे फर्स्ट होची आर्किटेक्चरल सिंथेसिस
माने जो डोम्स आर्क्स तांकर इंटीग्रेशन है विथ इंडियन मोटिव्स. Second, linguistic fusion. Linguistic fusion सेटा नुआ लिटरेरी कल्चर प्रोड्यूस कला. Third, devotional tradition. Interaction of devotional tradition. Okay. And economic impact कौन थे? Economic impact टिके देखिबा. होची monetization of economy. Then ଆମର ଯିବ କି Afro Eurasian trade network ର integration. Third, urbanization and new crafts. Conclusion होची initially जो मु कहिली से माने कोन करूथिले से माने रेड्स करूथिले. इनिशियली कोन थिला तो रेड करूथिले तो डिस्ट्रक्टिव थिला से एक्टिविटी. सो दो इनिशियली डिस्ट्रक्टिव, से जो इन्वेजन्स थिला इट reshaped India's polity, economy, culture, and then ushering a new medieval synthesis. Right. Next, discuss the various types of unemployment prevalent in India. Why has rapid economic growth not translated into adequate employment generation? Read the question. तो क्वेश्चन एठी कोन पचारला कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी जोटा कि इंडिया रे प्रिवेलेंट ताकू डिस्कस करबा को कहिछि. देन व्हाई हैज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ not translated into adequate employment generation. Rapid economic growth केमती properly adequate growth है कि भी केमती properly समस्त का भाई employment एटी generate है ही पारेनी, adequate employment generation है ही पारेनी. तार reason भी एटी पचारची. Why? Introduction रो हम एमती start करिबा कि India faces multiple forms of unemployment, revealing structural weakness despite rapid GDP growth.
राइट देन बॉडी रे फर्स्ट होची हमें मेजर टाइप्स डिस्कस करबा क्वेश्चन ने पचारथिला मेजर टाइप्स कौन टाइप्स इंडिया रे प्रिवेलेंट होची अनएम्प्लॉयमेंट रो फर्स्ट तो आसी जीवो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होची कि गोटे काम करिया पई जदी गोटे काम को फुलफिल करिया पई जदी 10टा वर्कर दरकार ताहले सेठी कोन हेचंदी 20टा वर्कर सेठी एम्प्लॉयड हेचंदी एंड एटा देखिया को मिले पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हमरो एग्रीकल्चर रे सो एक्सेस वर्कर्स इन एग्रीकल्चर विथ नियर जीरो प्रोडक्टिविटी ओके सीजनल सीजनल होची इट इज लिमिटेड टू क्रॉप साइकिल जेमति कि हमर फॉर एग्जांपल इंडिया रे कोन मॉनसून ड्रिवन एग्रीकल्चर बेसी सो सोइंग सीजन रे हेला कि हार्वेस्टिंग सीजन रे हेला बेसी वर्कर्स एम्प्लॉय होंती एंड तापरे हार्वेस्ट हे सारला परे पूरा वर्ष सेते वर्कर्स मानको सेटी एम्प्लॉयमेंट मिले नाही सो दिस इज सीजनल व्हिच इज मॉनसून डिपेंडेंट ओके थर्ड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रे कोन स्किल मिसमैच विथ इंडस्ट्री डिमांड स्ट्रक्चरल होची स्किल मिसमैच माने जो एजुकेशन से माने पाउचंदी जो स्किल से माने को दिया जाउची जदि सेटा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हिसाब रे कंप्लाई करू नथिबो तो ताको ऑब्वियसली जॉब्स मिलिबनी सो स्किल जेतोले मिसमैच करे एंड से माने अनएम्प्लॉयड रुहंती ताको कुहा जाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देन आ गोटे हमर आसीबो फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल होची टेम्पररी जॉब गैप्स धरो आपण कोन करचनी आपण गोटे जॉब रे थिले तापर आपण चाहउछंती कि आपण को हायर सैलरी मिलू कि अलगा जॉब स्विच करिया को ड्यू टू एनी रीजन तो एठू छाडी कि जेतबेले आपण जॉब खोजिबे ए जो गैप टा रहिला जॉब सर्च गैप टेम्पररी एंड एटा टेम्पररी काना कोड ना कोड जाय कि आपण जॉब करिवे आगु को जाय कि फ्यूचर रे सो ए जो टेम्पररी जॉब गैप टा रहिला ताकू को जाय फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जॉब गैप जॉब सर्च गैप नेक्स्ट एजुकेटेड एजुकेटेड होची ग्रेजुएट्स लैकिंग सुइटेबल अपॉर्चुनिटीज जो ग्रेजुएट्स माने अछंती तांको सुइटेबल अपॉर्चुनिटी मिल पारु नाही तो से माने जॉब से जॉब को पिक करू नांती सो लैकिंग सुइटेबल अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलॉजिकल एटा होची ऑटोमेशन रिप्लेसिंग लेबर जेमनी बहुत हाईली एडवांस्ड फैक्टरीज हे गला से माने कोन करंती बेसी मशीन्स ऊपर डिपेंड करंती ऑटोमेशन ऊपर डिपेंड करंती सो एटा होचे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट वेयर ऑटोमेशन रिप्लेस द लेबर रीजन कोन व्हाट आर द रीजंस रीजन कोन की ग्रोथ जेनरेट करि पारेनी इनफ जॉब फर्स्ट होची कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ इंडस्ट्रीज माने से माने कोन करछन्ती एबे मु जो कहली मशीन्स ऊपर बेसी रिलाय करछन्ती देन वर्कर्स आउ गोटे रीजन होची सर्विस सेक्टर डोमिनेंस सर्विस सेक्टर डोमिनेंस आईटी बा जो फाइनेंस सेक्टर हमर हैला दे अब्सॉर्ब लिमिटेड लेबर वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रहला सेटा एबे जाय भी अंडर डेवलप्ड हे अछि सो सेठी इनफ जॉब सेठी क्रिएट हे पारु नाहंती वर्कर्स माने सेठी इनफ एम्प्लॉय हे पारु नाहंती जेति कि हबा कथा स्किल गैप एक्जिस्ट करुची जेमती एजुकेशन जो स्टूडेंट्स माने पाउचंदी तांकर से जो एजुकेशन थ्रू तांकर जो कैपेसिटी बिल्डिंग बा स्किल से माने पाउचंदी इट इज नॉट अलाइंड विथ द मार्केट नीड्स बट मार्केट को सेटा दरकार नाही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हिसाब रे कंप्लाई करू नांदी सो तांको सेठी जॉब मिलुनी सो देयर इज स्किल गैप इनफॉर्मलाइजेशन होची ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड इन लो सिक्योरिटी in low security informal jobs then
regional imbalance भी रही डेवलपमेंट अनइवन रही अक्रॉस द स्टेट्स एंड देन इम्प्लिकेशंस कौन रोचे इम्प्लिकेशंस होची कि इनइक्वालिटी बढ़ुची देन फ्रस्ट्रेशन एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ुची माने गोटे जॉब को करिया तांको जेतिकी सैलरी से पाइया कथा तांको सेतिकी सैलरी मिलु नाही as compared to the work pressure they are getting pressure on urban labor market okay conclude केमती करिवा आंसर को conclusion रे इंडिया रा जो चैलेंज टा रहला इंडिया's challenge is not growth alone but employment intensive growth जहा की align करूथिबो that aligns skills industry and policy बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्रिटिकली एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 and the right to freedom article 19 through judicial interpretation how have these rights been balanced against reasonable restrictions right to equality और right to freedom रो जो एवोल्यूशन रहिला ताको क्रिटिकली एनालाइज करबा को पचारची थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम को रो जो एवोल्यूशन हैला ताको क्रिटिकली एनालाइज करो देन से जो राइट्स गुडा रहिला से गुडी को केमिति बैलेंस करा जाईची अगेंस्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हाउ तो क्वेश्चन जुडिशियल एवोल्यूशन पचारची इक्वालिटी आउ फ्रीडम रो इंट्रोडक्शन फर्स्ट जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रहिला सेटा फंडामेंटल राइट्स को गोटे रिजिड टेक्स्ट रु सेटा ट्रांसफॉर्म करिछि इनटू डायनामिक गारंटीज इंट्रोडक्शन एमति लिखिबे judicial interpretation has transformed fundamental rights into dynamic guarantees. Then
एक्सपांशन ऑफ बॉडी रे हमर फर्स्ट हमें देखिबा कि इक्वालिटी को केमिति एक्सपैंड करा गला राइट टू इक्वालिटी को सो एक्सपांशन ऑफ इक्वालिटी एक्सपांशन ऑफ इक्वालिटी फर्स्ट होसी रीजनेबल क्लासिफिकेशन डॉक्ट्रिन एथरे प्रोवाइड करा जायछि सेकंड सब जोटा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन डॉक्ट्रिन होछि ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी अलाउ करे जदि सेटा रैशनल हेतिबो देन सब्सटैंटिव इक्वालिटी recognized affirmative action as equality tool third abolition of social disabilities एबोलिशन ऑफ सोशल डिसेबिलिटी से कौन है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट क्राइटेरिया फॉलो हुए अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देन देखिबा कि एक्सपांशन ऑफ फ्रीडम फ्रीडम एथिरे स्पीच मूवमेंट और प्रोफेशन रो मीनिंग को ब्रॉडन करा गला ब्रॉडन द मीनिंग देन recognize rights as press freedom and commercial speech ए सब राइट्स को भी recognize करा गला लिबर्टी को डिग्निटी एंड प्राइवेसी सहित लिंक करा जायछि तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस सहित आपको बैलेंस केमती करा जाउची बैलेंसिंग विथ रेस्ट्रिक्शंस कोर्ट से कौन करची कोर्ट ना किसी टेस्ट इवॉल्व विथ सर्टेन टेस्ट जेमती कि टेस्ट रे हमर रहिबो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होची रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव ओके जो रेस्ट्रिक्शन टा लगा जाउची सेटा कम से कम रेस्ट्रिक्शन लगा जाउ दियो इट मस्ट बी लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव देन पब्लिक इंटरेस्ट रे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करा जाउथिबो टेस्ट होची क्लियर डेंजर टेस्ट गोटे अछि क्लियर डेंजर टेस्ट होची स्पीच लिमिटेड ओनली व्हेन हार्म इज इमिनेंट जदि कहा स्पीच रो कोनोसी सेक्शन बा कहा को हार्म होतिबो ताहले इट इज लिमिटेड विथ ओनली व्हेन हार्म इज इमिनेंट जुडिशियल रोल होची जहा भी आर्बिट्रारी लॉस बना जिबा ताको स्ट्रक डाउन करिबा स्ट्रक डाउन आर्बिट्रारी लॉज देन रिजर्वेशन को अपहेल्ड करिबा एंड वेलफेयर पॉलिसीज को भी अपहेल्ड करिबा सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करिबा ड्यूरिंग इमरजेंसीज ओके एठी गोटे क्रिटिकल इनसाइट भी हमें ड्रॉ करि परिबा कि कोर्ट्स से माने दे ऑफन एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियंस किंतु डिबेट्स एबे भी परसिस्ट करूची जुडिशियल ओवररीच को नेकी द कंक्लूजन हमें एठू एमती लिखिबा कि judiciary has harmonized liberty with social order ensuring जो rights रहिला they remain meaningful yet
responsible. ठीक अच्छे. Next, the Cholas combined military strength with administrative innovation and maritime expansion. Evaluate this statement with reference to their imperial administration, naval expeditions, temple architecture, and overseas trade networks. Cholas केमिति military strength को combine କରିଥିଲେ administrative innovation ସାଙ୍ଗରେ and maritime expansion ସାଙ୍ଗରେ एटा गोटे statement दिया जाइछि. Then कहिछि कि एई statement को evaluate करियाको with reference to their imperial administration, naval expeditions, temple architecture and overseas trade networks. Multiple areas को address करिबार अछि ए question रे. So starting with introduction कि Chola state it exemplified how military strength can support administrative efficiency and global commerce. Right. Imperial administration. Imperial administration तांकर taxation टा ना systematic थिला and land service से माने conduct करुतले. Hierarchy, provincial hierarchy तांकर organized थिला. Autonomous local assemblies ensuring governance. Autonomous local assemblies भी थिला जोटा कि governance ensure करुतला. Military and naval strength तांकर गोटे powerful standing army थिला. And navy भी तांकर बहुत strong थिला. Strong navy जोटा कि overseas expedition को enable करुथला तांकर possible करुथला because they had strong navy. Control of sea lanes. Ensuring strategic dominance. Then what about maritime trade? Maritime trade was active. Active कोठी Southeast Asia, China and Arab regions. Then merchant guilds ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ internationally operate କରୁଥିଲେ. Operated internationally. Commercial hub जो ports माने थिले they acted as commercial hubs. Then discussing about temple architecture. Temple architecture रे तांको जो monumental temples थिला it symbolized imperial authority.
देन एटा इकोनॉमिक सेंटर हिसाब रे भी माने काम करूतले दे फंक्शन एज इकोनॉमिक सेंटर्स holding land and wealth. And the temple architecture also promote art, sculpture, bronze casting traditions. Then integration of power. Integration of power रे military secured routes थिला. Military secured routes. Then administration managed resources. Third ଆମର କଣ ହବ? Trade wealth generate କରୁଥିଲା. And culture rule को legitimize କରୁଥିଲା. Culture legitimized rules. Conclude केमती करबा आंसर? Cholas success they lay in integrating war, governance, commerce and culture into a unified imperial strategy. Okay. Last question. Examine the constitutional provisions relating to citizenship, Article 5 to 11. Critically discuss how the distinction between citizens and non-citizens becomes significant in the enjoyment of fundamental rights up to Article 19. क्वेश्चन पचारची कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रही रिलेटिंग टू सिटीजनशिप आर्टिकल 5 रो नेकी 11 जो सिटीजनशिप एटी अच्छी ताकू एग्जामाइन करने को देन क्रिटिकली डिस्कस हाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बिकम सिग्निफिकेंट इन द एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अप टू आर्टिकल 19.
सिटीजनशिप प्रोविजंस ये डिफाइन करे मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड डिटरमाइन द एक्सेस टू की राइट्स. ओके, जो सिटीजनशिप रो प्रोविजंस रहिला हमर 5 टू नै कि 11 जगह इट डिफाइन membership of the political community and determine access to key rights. Constitutional framework. Constitutional framework article 5, just a second, article 5 to 8 এটা হচ্ছে citizenship at commencement. ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ. आर्टिकल 9 लॉस ऑन आर्टिकल 9 कोन कुए आर्टिकल 9 कुए कि फॉरेन सिटीजनशिप को जदी के एक्वायर करिवो ताहले तार इंडियन सिटीजनशिप सेटा टर्मिनेट हेजिवो. सो लॉस ऑन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप. 10 कहूची कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप राइट्स. 11 कौन कहला पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू रेगुलेट सिटीजनशिप. पार्लियामेंट पाखरे से पावर अछि. सिग्निफिकेंस होची कि राइट्स ओनली फॉर सिटीजन. कौन कौन राइट्स ओनली हम इंडियन सिटीजन्स मानको पई कि अवेलेबल. राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स रे जेमति कि स्पीच जीवो, मूवमेंट जीवो, प्रोफेशन, एसोसिएशन, रेसिडेंस एगुडी को सब ओनली फॉर सिटीजन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आल्सो एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एगुडी को केवल सिटीजन मानको पई कि अछि. ऑल पर्सन्स आ गोटे थाई कि सेटा समस्त को पई एप्लीकेबल माने सिटीजन्स होंतु कि एलियंस होंतु. इक्वालिटी बिफोर लॉ. Then protection of life and liberty. And freedom of religion. And ये जो डिस्टिंक्शन टा करा जायछि व्हाई दिस डिस्टिंक्शन एक्जिस्ट कोन पई करछि. सब राइट्स तो समस्त को देई देबा कथा. सो व्हाई दिस डिस्टिंक्शन एक्जिस्ट. फर्स्ट की सोवरेनिटी को प्रिजर्व करिवा पई की. ओके, नेशनल आइडेंटिटी प्रिजर्व करिवा पई. एटा इंश्योर करिया पई कि जो पॉलिटिकल पावर रहिला इट रिमेन ओनली विथ द मेंबर ऑफ स्टेट. एंड लास्ट ए स्टेट को अलाउ करे टू रेगुलेट द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी. नाउ व्हाट इज द जुडिशियल अप्रोच. जुडिशियल अप्रोच टिके देखिबा कि जुडिशियल अप्रोच रे कोर्ट से कोन करंती ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन को एक्सटेंड करंती टू हुम टू नॉन सिटीजन्स थ्रू व्हाट थ्रू राइट टू लाइफ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ओके, एंड कोर्ट जुडिशियल अप्रोच आउटे कोन कि इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी डिटेंशन और डिपोटेशन. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जदि एठी हमें ड्रॉ करिबा सेठी हमें देखिबा कि डिस्टिंक्शन टा एक्चुअली नेसेसरी किंतु एटा अन्य मानकर ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट न करूथिबा दरकार. एक्सपैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनिवर्सल राइट्स एटा रिड्यूसेस द हार्शनेस. Conclusion. Citizenship defines political belonging, but constitutional morality ensures even non-citizens receive
बेसिक ह्यूमन प्रोटेक्शंस सरला सो आमे आज 6टा जाक क्वेश्चन आमे डिस्कस करि सारचे तापरे नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ गोटे पेपर डिस्कस करिबा जो माने पेपर्स दो नांती मु तांको एडवाइस करिबी कि डू गिव द पेपर्स डू गिव द टेस्ट एंड एठी क्लास रे जो नोट्स हैला कि किछि की पॉइंट्स हैला कि किछि की वर्ड हैला ताको श्योर जॉट डाउन करूथिबे नोटबुक रे ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे क्लास ओवर थैंक यू फॉर वाचिंग